As usual, I've worked with Inderkumar, Induji, and people still remember me in two scenes in Ishq. So for me, it's like family, and I've come here to have fun. It's been a long time since I've enjoyed a movie, so I've come here just to enjoy the film, and I know we'll get that. As a director, Anand, we would like to know because nowadays what's happening is in a group dance or in a item song, bathroom singers, there are more number of foreign dancers than Indian dancers. तो ऐसा क्यों हो रहा है और कहाँ गए हमारे Indian dancers? So you know what, in the other faculties like research and software and all that, the outsourcing is done from India. In films, the outsourcing is done from abroad. ऐसा क्यों Bytes film prefer कर रहे हैं Indian dancers to work? Well, I guess we've run out of dancers, or probably they feel that if you put white-skinned people in, it gives an international feel. Well, a film is meant to provide artificial respiration in any way. So I guess that is what they think when they get foreign dancers. You feel that you've got international suddenly. Well, to each his own. The three most important things lined up in your life. It could be career, it could be your life. Three Well, my films, my music, and my scripts. So my films which are forthcoming, Agar and Anamika. My music, which I always love, it's a hobby. And the scripts I'm working on for my future films. So I think those are the three most important things at the moment. Well, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ राज साहब के बारे में बात करने के लिए. हमने उसकी सारी फिल्में देखी हैं और जिस तरह की रेलेवेंट फिल्म्स उन्होंने बनाई है, आग, जागते रहो, आवारा, I mean that was the golden era of Raj Saab, I think so. Later on, I mean up till मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली में एक अलग कमर्शियल मिल्यू था, लेकिन द सोशल रेलेवेंस रियली हिट यू इन हिज अर्लियर फिल्म्स. जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है के बारे में मैं ऐसे एक एनेक्डोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बॉस मिस्टर वी साठे ने मुझे बताया था कि जब उन दिनों में फिल्म्स यूज्ड टू बी रिलीज्ड इन सेपरेट टेरिटरीज एट डिफरेंट टाइम्स. लाइक दिल्ली में रिलीज़ हुए तो शायद बॉम्बे में रिलीज़ नहीं होती, 2 हफ्ते बाद बॉम्बे में रहे. तो कैलकाटा में जिस देश में गंगा बहती है का प्रीमियर हुआ था, और जिस रात प्रीमियर हुआ था, प्रीमियर ऑडियंस, क्योंकि हम एक प्रीमियर में खड़े हैं बात कर रहे हैं, प्रीमियर ऑडियंस इतनी चुपचाप वहाँ से बाहर निकली कि राज कपूर साहब ने साढ़े साहब से कहा द फिल्म इज़ अ फ्लॉप. किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया. द नेक्स्ट डे इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर. सो इट ऑल्सो गोज टू शो दैट प्रीमियर ऑडियंसेस आर नॉट ऑलवेज राइट. द फिल्म कैन बी समथिंग एल्स. कौन सी ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उनके बारे में? What inspires you? I think his romances. He was a very romantic person himself. तो जब राजी और नरगिस एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते थे और प्यार हुआ, इकरार हुआ गाते थे, तो वो रियल लगता था. It wasn't artificial. That was the age of golden romance. That age is all over now.